Okay, Varun, Yes, sir. can you just give you brief intro? Yes, sir. So my name is Varun Chukotra. I have done BE in Mechanical Engineering from Jammu University, and after that I pursued my M.Tech in Machine Design from NIT Calicut, and I post-graduated in 2021. Mhm. So from then I was preparing for government examinations only. So, which examination you are just qualified now? Sir, JKPSC AE Mechanical. What's your interview date? So 15 March. 15th of March. So, you are just a student of a design also. Can you just Yes, sir. design as design a connecting rod for IC engines? What are the various parameters you are just going to be consider? So firstly we know the function of the connecting rod, that is to connect the crank rod and the piston. So we will be knowing the value of the shear stress. I mean, we will be knowing the value of all the stresses that are generated in the connecting rod. So based on that, we will select the material I for the am first just step. asking. So, you just tell me what type of stress are going to be induced here. So normal stresses and the You have to just design the IC engines, है ना? Just take a example of a cylinder, and there is a okay. combustion of a fuel inside it. So, what are the parameters you are going to be considering? Can you draw this? So basic step in designing is to firstly select the material specifications. I'm I not mean asking the basic steps. I am just designing the IC engine. the on the basis of strength criteria, we will find out the stresses that are generated. Yes. Then on the basis of rigidity criteria, we will uh, I mean the deformation will be noted in the connecting rod. These are the two methods on the basis of which the design are done: rigidity criteria and strength criteria. So stress कौन-कौन से induce होंगे? So the connecting rod, uh, I'm not sure about that, but I think normal stresses will be there and shear stresses will be there. Both will be there. Okay. Can you just know about the Lewis equation? So Lewis bending equation. क्या होती है? So it is used to design the gear actually, and Okay. here we find the beams. Sure. So actually, I have not revised the design part on. I've only studied the strength of material part only. So I you I'm know not that able you are to. belongs to the you are just complete your M.Tech from the design section. Yeah, but actually, I did not revise the design part. Okay. If I have a three section, that is a one is a rectangular, and the other is the I Mm, section, and third one is a mm, circular. So okay. which section is more good or on the basis of design criteria? Which section I am just going to be consider? So I section will be the best section because it will be having the highest value of the section modulus. What is the section modulus? So section modulus is defined as the ratio of moment of inertia about the neutral axis divided by the distance that is taken from the neutral fiber. What do you mean by neutral axis? So neutral axis is the axis where which is not subjected to. I mean that length of the neutral axis remains the same even after the bending, or you can say that it would not go any deformation when the bending is applied. Okay. When I'm just talking about the beam, how can you just define the beam? What is the beam actually? So beam is a structural member which is subjected to bending as well as the shear force. But generally we consider the bending only How can you say it is always subjected to the bending and shear force? because the value of bending is much higher than that of the shear force. So we simply consider the value of मतलब अपन bending. ने bending moment लगाना ही लगाना है. Bending, sir, like bending stresses generate हो रही है ना जो that are greater than the value of the Bending shear इससे generate stresses. कैसे हो रहे हैं? So when we are applying the shear force, Shear force apply करने bending stress कैसे generate हो रहे हैं? मुझे थोड़ा define करो. so suppose कोई भी member है उस पे हमने जब shear force लगाया Okay. तो its longitudinal axis will get deformed.
Can you just define the bending moment? So bending moment is a resisting moment that is generated. Sir, actually, I can show the diagram, and on the Yeah, you basis of can. diagram, suppose, let me draw first. हमारे पास एक एलिमेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शन है, तो उस पे हमने लगाया है shear force लगाया. So then the top section will be under compression, and the bottom section will undergo tension. And because of these tension and compression, the normal force will be generated, and this normal force will cause a movement. That is a bending moment. Bending moment और twisting moment या twisting couple में क्या difference? So twisting moment is always both the centroidal axis, and bending moment is always both the neutral axis. And bending moment always. What is the difference between the neutral Yes, axis and centroidal axis? So centroidal axis is the axis which passes to the center of the cross section, and neutral axis may be the center, may pass to the center of the cross section, or it would not cross. I mean, that depends upon the types of loading. Neutral axis will depend upon the type of loading. On the basis of that, it will. तो अगर सेम ही है तो उस केस में क्या करोगे? फिर क्या डिफाइन करोगे बेंडिंग का? सर बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बेंडिंग कपल होता है which is perpendicular to the cross section. If the couple is perpendicular to the cross section, then it is known as a bending moment. And if it is parallel to the cross section, if the moment is parallel to the cross section, then it is known as the twisting couple. Okay. So यहाँ पर कैसे आ रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है बेंडिंग स्ट्रेस? सर जैसे मैंने बोला कि एक क्रॉस सेक्शन है, उस पे हमने जब shear force लगाया, तो जो टॉप सेक्शन है that will undergo compression and the bottom section will undergo tension. So सर इस टेंशन और कंप्रेशन की वजह से एक मोमेंट जनरेट हो जाता है. That forms the bending moment. Like if you could see, जैसे ये टॉप से अगर विजिबल हो, टॉप सेक्शन है, तो इसमें अगर स्ट्रेस फोर्स जनरेट हो रहा है जो अगर इस डायरेक्शन में है, तो बॉटम सेक्शन में ऑपोजिट हो जाएगा. बिकॉज अगर टॉप वाला हम टेंशन शो कर रहे हैं तो बॉटम वाला कंप्रेशन हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा टोटल लोडिंग के ऊपर. तो अब देख सकते हो कि जैसे ये रोटेशन कॉज कर रहा है, हर एक मेंबर रोटेशन कॉज कर रहा है, बिकॉज मेंबर इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल तो लाइक जीरो होना चाहिए. लाइक इसका समेशन. अच्छा मुझे एक्चुअली बोलो, जैसे आपने शियर फोर्स लगाया, शियर फोर्स को इक्वेट कर रहे हो बेंडिंग कपल के, तो क्या शियर फोर्स इज ओनली इक्वेट टू द बेंडिंग? नो सर, एक्चुअली दो, एक तो शियर फोर्स भी जनरेट हो रहा है, दैट इज इन बॉटम डायरेक्शन. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट शियर फोर्स? That will cause the shear stress. That will affect the shear stress. What is the cause of the shear force? So this shear force is generating the bending stress in the member. Only bending stress? Bending stress and the shear stress, both. Shear stress. So yes, shear stress के लिए criteria क्या होना चाहिए? Like shear stress वाला कौन सा shear stress लगेगा यहाँ पे? So now I'm not able to understand the question. What type of shear stress are going to be act here? I know the type of shear stress. No sir, there's a normal, I mean shear stress type. No sir. Type of shear stress तो नहीं. Varun, next time you will prepare these things, है ना? Very well. थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा, आपका इंटरव्यू भी पास में है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, क्योंकि आपका देखो डिजाइन से आपने NIT से किया है M.Tech, so that will directly asking the question, so many questions from the design section as well as the strength of, as I think so. और you should be good in that topics, है ना? और जनरली लोगों ने जो चीज देखी होती है उस पर क्वेश्चन पुट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे कि पावर प्लांट देखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत होते हैं, बट आपका फील्ड
वो नहीं है तो दे हम्म, जस्ट सी द आईसी इंजन, सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम द आईसी इंजन्स, गियर्स, ओके, है ना, डक्टाइल यस ब्रिटल सर, ब्रिटल मटेरियल, सो इन सब में वो काफी चीज पूछ सकते हैं। थोड़ा यस सा सर, आपको प्रिपरेशन करना है एंड देन गिव द स्नैप अवे, है ना। ओके सर। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये सर या आपने यू जैसे पूछा कि शेयर स्ट्रेस पूछा, टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेस में मुझे कंफ्यूजन है, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेस, वन इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड सेकंड में टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ओके। Torsional shear stress only हम्म, acting in the case of circular section. Direct shear stress can be active by using the shear force. तो yes, आपको sir. ये पता होना चाहिए। हाँ ये ऐसा पता था मुझे, मतलब दिमाग नहीं आया उस टाइम, डायरेक्ट तो टॉर्जन। उसका रीजन यही है बेटा, अगर नहीं दिमाग पे चलेगा इंटरव्यू हाँ में तो कैसे काम चलेगा, है ना। उसी के लिए ठीक है मॉक सर। होते हैं कि जहां हाँ अपनी जी सर, कमियों को पहचानो, उसे रिवाइज करो एंड देन गिव द आंसर। ठीक है सर, कल फिर से दे दूंगा इसी टाइम पे रिवाइज करके। कल दे दो, परसों दे दो, जब भी बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लोगे देन यू विल हम्म, गेट द गुड आंसर, है ना। एक क्या सर, होता है कि आपको अपने आप को शार्प करने के लिए भी एक लेवल तक आना पड़ेगा ना, हम्म, देन यस यू कैन जस्ट शार्प योर नॉलेज। पहले सर, वो सब चीज अच्छे से पढ़ लो, है ना। 15 को इंटरव्यू आपका, कल आज हम्म, पढ़ लो, कल पढ़ लो। अगर कल तक कंफर्टेबल हो जाते हो कि हाँ आई एम कंफर्टेबल, सो गिव मी टुमारो, अदरवाइज गिव मी डे आफ्टर टुमारो, है ना। नो इशू, ओके मैं डेली अवेलेबल रहता हूँ, आप डेली कभी भी आ सकते हो, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर।